Good morning, students. Once again, you are welcomed in the science class. First, I want to draw your attention on the last time homework which is given to you. I repeat question that may be written by you and answer we are telling to you also. So, our last homework, that is check your knowledge first, in which one heading, that is the name the following, in which we have total 4 questions. First one, the process of obtaining and utilizing food by organisms. Answer will be nutrition. Second question, the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food. This is question. For answer is autotrophic. And the third question is mode of nutrition in which organism depend on other. Answer is heterotrophic. And the last, for this test used to detect starch. Answer is iodine test. Okay, this is the homework given to you last time. Answer available on the board, and questions and answer both. Now we come on our next topic of this lesson. Our next topic is heterotrophic nutrition. You know the hetero term means depend on others, or nutrition means already you know getting the food. Some plants that do not have chlorophyll cannot synthesize their own food, so they depend on other plants for food, and this mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. This is the type of nutrition, and the organism having this type of mode of nutrition are called heterotrophs. Heterotrophs are of the following types, in which first number is parasite, second number that is saprophyte, parasite, saprophyte, and third one that is symbiont. These are the different types of heterotrophs. Now first we want to describe about the parasitic plants. Parasitic plants are those organisms which obtain food from other organisms. Once again I repeat this matter. Definition of parasites is in this way. Parasites are those organisms which obtain food from other organisms. Okay? Now you know in this definition term organism include plants and animals, and the living body from which
parasite obtain food is known as host. It is clear? Once again I explain. The process of taking food from other organism is known as heterotrophic nutrition. And the living body from which heterotrophs obtain food is known as host. It is a kind of association in which only parasites are benefited. Please keep in mind, in case of the parasite or host, parasite benefited and host lost something lost. Parasitic plant take their food from other plant such as cuscuta. In common language we say amarbel is a parasitic plant. It has special tubular structure called hosteria that penetrate into the tissue of tree from which it gets food. This is the first example. Second example of parasite, that is mistolate, as it is rafflesia, yellow rattle, witchweed and broom map are some other example of parasitic plants. Now something about the science bits also. First science bit is in this way. Water help to keep a plant cell rigid and turgid and help plant to stand upright. It is already taught to you in the last class also. Now second science bit is in this way. At least 3000 plant species are heterotrophic nutrition. At least 3000 plant species have heterotrophic nutrition. About 590 plant species are carnivorous or insectivorous. Carnivorous and insectivorous are also the type of the plants. This is the first type of parasite is clear here. Now we want to explain about the saprophyte. You know saprophyte means there are some living bodies which are getting their food from dead, decaying organic matter. They are known as saprophytic plants. Now please look what is written in here. The mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead, decaying matter is called saprophytic nutrition. Plants that use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. Please clear here, saprophytic is the nutrition and saprophytes are organisms which follow the saprophytic process. Examples are here, that is fungi, mushroom, Indian orchid, snow orchid, etc. All are saprophyte, means they have lack of chlorophyll. You know, in all the most of the plants are green in color of their leaves due to the presence of green pigment called chlorophyll, but chlorophyll is absent in the saprophytes. You know that one famous example of the fungi
that is the mushroom. It is grown anywhere during the rainy season on the old log of wood, on the or any other organic waste, etc. Now next science bit is in this way. Fungal spores are present in air all the time. In rainy season, they germinate and grow on leather items, pickles, and spoil them. Sometimes you are observing many things that pickles of raw mango, etc. if have lack of vegetable oil in it, then some fungus are appear on it. Okay, this is the completion of the second saprophytes. Now last one, that is the symbiotic plants. First I want to clarify here, in case of the parasitic plants, only host lost something or parasite benefited. But in symbiotic plants, two living organisms combine in this way that both of them are benefited, no anyone lost something. Now look what is written here. Symbiosis is a relationship between two organisms in which both organisms are benefited from each other, and the organism present in this association are called symbiont. Please remember, symbiosis is the term that defines the relationship between the two living organisms in which both are benefited, and this is symbiotic plant. Example, lichen. You know lichen means? Lichen is an example of symbiosis in which two symbiont or component are alga and fungus. You know algae means, alga or algae symptom. Algae are the green structure that develop near the water resource or moist places, and fungus that already we studied just now about the mushroom, etc. The fungus provide shelter, water, mineral to the alga. In return, alga that contain chlorophyll synthesize food by photosynthesis and provide to the fungus. This matter simply we explain in Hindi language also for your better performance. सिम्बायोसिस के अंदर जो टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दोनों को एक दूसरे की वजह से बेनिफिट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है. इसमें एक एग्जांपल बताया हमने आपको अभी अबाउट द लाइकेन. लाइकेन का मीन्स क्या होता है, जब भी कोई एल्गी और फंगस दोनों एक साथ में मिलकर लाइफ चलाते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ सिम्बायोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट. और आपको पता है एल्गी green in color means it contained what? Chlorophyll. Means able to perform photosynthesis process. लेकिन फंगस के अंदर क्या होगा, ये एल्गी को शेल्टर देगी, प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, और इन दिस वे जो भी फूड एल्गी बनाएगी उसको फंगस भी यूज करेगी और एल्गी भी यूज करेगी, और फंगस बदले में एल्गी को शेल्टर देगी, वाटर, मिनरल्स, ये सब कुछ रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कराएगी. दिस इज द समथिंग अबाउट द सिम्बायोटिक प्लांट्स.
Now I tell you one more thing, that is the insectivorous plants. Please look on the board. That is the fourth condition. Insectivorous plants. You know that they are also known as carnivorous plants. Sorry for it. Before it, I want to tell you one more example of the symbiosis. Similar relationship is found in between the legume plants such as pea, gram, etc. and bacterium rhizobium that is found in the root nodules of these plants. Please try to understand first. हमने अभी आपको बताया कि एल्गी और फंगस दोनों आपस में मिलकर के और लाइफ चलाते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है. वो क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोसिस. और इनको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स. उसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको. यू नो लेग्यूम प्लांट. लेग्यूम प्लांट मीन्स होता है पल्स प्लांट. पल्सेस मीन्स यू नो pea, bean, मूंग, उड़द. These are the example of the legume plants. इनके रूट सिस्टम के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके अंदर एक स्पेशल बात होती है. नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊता को इंक्रीज करते हैं. ये तो बैक्टीरिया राइजोबियम का फंक्शन हो गया. और लेग्यूम प्लांट ग्रीन प्लांट है. By photosynthesis it prepare the food and which is provided to the rhizobium bacteria also. एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप. लेग्यूम प्लांट मीन्स पल्सेस प्लांट. पल्सेस मीन्स पी, बीन, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन एक्सेट्रा. इन सबको बोलते हैं लेग्यूम प्लांट या पल्स प्लांट. इनके रूट सिस्टम में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं और दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन गैस कंडीशन में होती है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है और दिस इज बेनिफिशियल फॉर द लेग्यूम प्लांट. इन रिटर्न उसके बदले में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं. वो राइजोबियम बैक्टीरिया को भी मिल जाता है. ओके, वंस अगेन सिंपली वी आर रीडिंग इन द इंग्लिश नाउ. Similar relationship is found between the legume plant such as pea, gram, etc. and bacterium rhizobium that is found in the root nodules of these plants. Rhizobium convert atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites that can be used by plants. Plants use this nitrogen to form proteins. In return, plant provide food to bacteria. This symbiotic association very important for farmers. Leguminous plant replenish the soil with nutrient so that fertilizer are not required to be put. एक और बात हम आपको बता दें, अगर कोई भी नई एग्रीकल्चर लैंड अगर होती है तो फार्मर्स फर्स्ट नंबर लेग्यूम प्लांट को उसमें ग्रो करते हैं.
उसकी वजह यही है कि उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और वो राइजोबियम बैक्टीरिया 2-3 टाइम्स की उनकी क्रॉप ऐसी उस पर डेवलप करने से फर्टिलिटी ऑफ द सोइल इंक्रीज होती है और बाद में दूसरी क्रॉप्स को वो उसमें कल्टीवेट कर सकते हैं। यहां पर हम आपको एक बात क्लियर कर दें, द टर्म बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म और बैक्टीरियम इज द सिंगुलर फॉर्म। ओके, नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट, दैट इज द insectivorous plant, that is the last point. Insectivorous plants are also known as carnivorous plants. और you know, carnivorous plant का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन carnivorous animals का नाम आपने सुना होगा। Carnivorous animal, they eat flesh of other animals. But this is the another type of plant which trap the insect in them. How? Now look here. Some plant trap insect with the help of special leaves present in them to get the supply of nitrogenous compound. हमारी बात को सुनना, जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ऐसी जगहों पर होते हैं वहां की सॉइल में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की कमी होती है। उस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए नेचुरली उनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीफ वगैरह का जो इंसेक्ट को ट्रैप करने की सारी फैसिलिटी उसमें होती है। These plants are called insectivorous plant. कुछ आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एग्जाम्पल पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप, ब्लेडरवर्ट, सनड्यू, these are the example of insectivorous plant and also known as carnivorous plant. In the peacher plant, a part of leaf modified to form the peacher-like structure which is covered with a lid. Inside the peacher, hairs are present which are directed downward. When an insect lands in the peacher, the lid closed and trapped insect is digested by digestive juices present in peacher. Please look on the board. Simply we are telling you what is the structure and functioning of the peacher plant. You know term peacher means, common language में मटका बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं उसको. Suppose this is a plant body, this is root system, or this is one structure of a leaf in this manner. और इसका टिप पोर्शन ऑफ द जो लीफ होता है वो इसके लीड का काम करेगा. You know, outer structure of this picture is bright color. ऐसे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट यहां पर आकर के अट्रैक्ट हो जाए. जब इसको इंसेक्ट अंदर लेना होता है ये लीड ओपन होती है. और दिस इज द पीचर. और आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इसके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो इसके अंदर हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड्स होते हैं. और यहां की जो टॉप पोजीशन, जब टॉप पोजीशन होती है ये स्लिपरी होती है, चिकनी होती है. और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस जगह पर आके बैठेगा, ये स्लिपरी जगह होने से वो इसके अंदर नीचे की तरफ गिर जाएगा. और जैसे ही इंसेक्ट नीचे गया, ऊपर से ये लीड वापस क्लोज हो जाती है. इंसेक्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके जो स्पाइस जैसी स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो आगे नहीं चढ़ पाएगा.
बदले में इन जगहों से कुछ डाइजेस्टेड जूस सीक्रेट होते हैं बाय द प्लांट्स एंड इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स और नाइट्रोजीनियस डेफिशिएंसी इज completed in this way. The insectivorous plants are green in color and can synthesize their own food. Please remember, ये जो मैंने आपको दिखाया इंसेक्टिवर्स प्लांट, पीचर प्लांट, ऐसे जितने भी इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस से खुद बना लेते हैं. But then why do insectivorous plant trap the insect? Because they usually grow in places where soil is deficient in nitrogenous nutrient. पहले हमने आपको बताया कि जहां नाइट्रोजन की कमी होती है सोइल में, ऐसी जगहों पर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं. उसको पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. सो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजीनियस न्यूट्रिएंट दे ट्रैप द इंसेक्ट एंड किल टू एक्सट्रैक्ट दीज न्यूट्रिएंट्स. तो उनकी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं और अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं. नाउ सम homework for you. Check your knowledge second. Don't worry, here we have only one question, that is match the following. Match the following में आपको दो कॉलम बनाने हैं, कॉलम ए और कॉलम बी. मैं पहले कॉलम ए के क्वेश्चंस बोल रहा हूं. फर्स्ट में लिखिए आप ग्रीन प्लांट्स, सेकेंड नंबर फंजाई, थर्ड नंबर फोटोसिंथेसिस, फोर्थ नंबर कुस्कुटा एंड लास्ट दैट इज लाइकेन. अब उसी के फ्रंट में कॉलम बी डालिए और उसमें नंबर डालना 1 2 3 4 5. उसमें नंबर फर्स्ट पे लिखिए सिम्बायोसिस, सेकेंड पैरासाइट, थर्ड नंबर ऑटोट्रॉफ, फोर्थ नंबर सैप्रोफाइट एंड फिफ्थ नंबर सनलाइट. Okay, in this way, this is the end for our today work and we will meet in the next class. Thank you very much.